Good morning, student. This is the class 9 subject social science, and this is the chapter 3rd of geography, and the topic name is drainage, and this is the lecture 4th. Student, firstly we will recall previous lecture, and previous lecture we have studied about Himalaya river and Peninsular river. And you know, drainage means the river system of an area, and in India there are two river systems, Himalaya river and Peninsular river. Himalaya rivers are originate from Himalaya and they flow from north to south. Himalaya rivers are perennial and they cover long distance from their sources to the sea, and they carry large amount of sand and silts. And the major Himalaya rivers are Ganga, Indus and Brahmaputra. Indus river originates from China, Tibet, and it entered to Jammu Kashmir, then it entered in Pakistan and drained into Bay of, then it drained into Arabian Sea. And total length of Indus river is 2900 kilometer. And the Ganga river originates from Gangotri glacier from Uttarakhand, and it entered to UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drained into Bay of Bengal. And its length of Ganga is 2500 kilometer, and Ganga river is the largest river in India. And the Brahmaputra river, it originates near China, Tibet, and it takes U-turn from Namcha Barwa and enter into Arunachal Pradesh and Assam, and then it enter to Bangladesh and drain into Bay of Bengal. So student, let's start our lecture, and today we will discuss about Peninsular river. And yesterday we have discussed two river of Peninsular river, and Peninsular rivers are seasonal and they totally dependent on rainfall, and Peninsular rivers are shorter than Himalaya river, and Peninsular river do not carry large amount of sand and silt, and they cover short distance, and they flow east to west and west to east. Only two rivers flow west to east and drain into Arabian Sea, Narmada and Tapi. And student, today we will discuss about Peninsular river, and first we will learn about Godavari river, Godavari basin, and the Godavari river is also called Dakshin Ganga. And Godavari river originates from Nasik district of Maharashtra, and length of Godavari is 1500 kilometer. And next we will learn about the Mahanadi. Mahanadi river originates from Chhattisgarh, and the Krishna river originates from Mahabaleshwar and drain into Bay of Bengal. And the Kaveri river originates from Western Ghat from Brahmagiri range and drain into Bay of Bengal and formed, and these rivers are formed delta. And student, last we saw some question, that question I have assigned in previous lecture. So student, let's start. First river is Godavari basin, and firstly you see the map of India, and you know student, this area are covered by Himalaya river, and this area is called Ganga Brahmaputra region. Student, Indus river originates from China, Tibet, and that it enter into Jammu Kashmir, that it enter to Pakistan and drain into Arabian Sea. East of Karachi drain into Arabian Sea, and length of the Indus river is 2900 kilometer. And the Ganga originates from Gangotri glacier, and the headwater of the Ganga is called Bhagirathi, and it enter to UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drain into Bay of Bengal. And the student, Brahmaputra river originates from near Mansarovar Lake, China, Tibet, and its flow eastward, and it takes U-turn from Namcha Barwa and enter into in Arunachal Pradesh, then enter to Assam and drain, then it enter to Bangladesh and drain into Bay of Bengal. And the Ganga Brahmaputra formed delta, and it is called Sundarban delta, and Sundarban delta is the largest and fast growing delta in the world, and here is Royal Bengal tiger are found in this area. Okay student, so these are the features of Himalaya river. And student, Peninsular river originates from Peninsula Plateau, and most of the river originate from Western Ghat,
And student, two rivers originate from middle of the country, and the Narmada river originate from Madhya Pradesh, and Narmada river, it is also called heart of the Madhya Pradesh, and Narmada river flow west to the country, and Tapi river also flow the parallel of the Narmada river, and Narmada rivers formed estuaries and drain into Arabian Sea. And today we will discuss about Godavari river. देखिए, Godavari river originate from Nasik district of Maharashtra, and the length of the Godavari river is 1500 kilometer. And Godavari is also called Dakshin Ganga because it's cover large part of the area. जैसे स्टूडेंट नॉर्दर्न प्लेन में गंगा रिवर ने बहुत नॉर्दर्न प्लेन के मोस्टली एरिया को कवर किया गया है, वैसे क्या है गोदावरी ने पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर है, और ये वाला जो साउथ का पार्ट है उसमें मोस्टली जो रिवर है वो गोदावरी रिवर ने क्या एरिया कवर किया गया है। 50% जो महाराष्ट्र एरिया जो कवर किया गया गोदावरी रिवर के द्वारा कवर किया गया है, इसलिए गोदावरी रिवर को क्या है सदर्न पार्ट का सबसे बड़ी रिवर कहा जाता है। तो इसको नाम है दक्षिण गंगा। उसके बाद हम और जो गोदावरी रिवर है इसकी फिर ट्रिब्यूटरीज हैं इसके साथ मर्ज हो कि फिर ये क्या है महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से फ्लो करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती हैं। उसके बाद है कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, एंड इट एंटर टू एंड इट्स कवर पार्ट्स ऑफ Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh and drain into Bay of Bengal and form delta in the mouth of the river. And this area are very fertile for agriculture. And last we discuss about Kaveri. Kaveri originate from Western Ghat from Brahmagiri range. Here is Brahmagiri range. And Kaveri river, it cover parts of Kerala, Karnataka and enter into Tamil Nadu and then drain into Bay of Bengal. Okay, and here is Mahanadi. Mahanadi originate from Chhattisgarh and it covers parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and drain into Bay of Bengal. So student, let's start our lecture, and firstly we will discuss about Godavari river. Student, Godavari river, it is the largest peninsular river and it rises from the slope of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. गोदावरी रिवर पेनिनसुलर रिवर में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट में जो स्लोप है उसमें वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है। And its length is about 1500 kilometer and it drain into Bay of Bengal. Total length, Godavari length is 1500 kilometer and it drain into Bay of Bengal. And the Godavari rivers cover parts of Maharashtra and 50% of area of Maharashtra covered by Godavari river. And some river flow from Madhya Pradesh and Odisha and Andhra Pradesh and drain into Bay of Bengal. Okay, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh covered by Godavari river. Student, here is Godavari river and its tributaries are Penganga, Venganga, Mazori एंड ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो क्या हैं ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें से बाद में क्या होती है मर्ज हो जाती हैं, जो मध्य प्रदेश ओरिजिनेट होती हैं और ये मध्य प्रदेश से हैं और कुछ महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ से ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मर्ज हो जाती हैं। तो गोदावरी का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गोदावरी को इसीलिए दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि गोदावरी क्या है साउथ साइड में सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिण, तो उसका नाम रखा गया दक्षिण गंगा। जैसे कि नॉर्थ में गंगा सबसे बड़ी रिवर है यानी कि इंडिया में सबसे बड़ी है जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया को कवर करती है, तो वैसे ही सदर्न पार्ट में सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज में मर्ज हो जाती है, जैसे वेन गंगा है, मंजीरा है, पेन गंगा है, ये बातें मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती हैं और जहाँ पे ड्रेनेज होती है वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं और ये डेल्टा जो होता है एरिया जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है।
The Godavari is joined by a number of tributaries such as the Purna, the Varda and the Parinita. Manjara and Panganga and Vanganga are the tributaries of Godavari, and it is also known as Dakshin Ganga because of its length and area it covers. Because Godavari river covers area of lump sum 1500 kilometer, and it also known as Dakshin Ganga, and its tributaries are Purna, Varda, Manjira and Panganga, Vanganga, and last Godavari drain into Bay of Bengal. So these are the feature of Godavari river, and it is the largest river in the peninsular rivers. And next Mahanadi river. Mahanadi basin, Mahanadi river, it rises in the highlands of Chhattisgarh. Means it rises the upland area of Chhattisgarh. It rises in the highlands of Chhattisgarh, and it flows through Odisha to reach Bay of Bengal. It passes from Chhattisgarh, Odisha, and enter into Bay of Bengal. And the length of the river is about 860 kilometer. Total length of the Mahanadi river is 860 kilometer, and its drainage basin is shared by some tributaries come from Maharashtra and some tributaries come from Jharkhand, and many tributaries merge in Mahanadi, and Mahanadi river cover area of Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. देखिए बेटा, महानदी जो रिवर है वो छत्तीसगढ़ के जो अपलैंड एरिया वहाँ से राइजेज होती है, उसके बाद वो उड़ीसा की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है. तो महानदी का जो एरिया है वो है 860 किलोमीटर. और महानदी जो रिवर है वो एरिया कवर करती है. कुछ पार्ट महाराष्ट्र से कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा के जो पार्ट में हैं वो महानदी रिवर फ्लो करती है. तो दीज आर द फीचर ऑफ महानदी. देखिए स्टूडेंट, here is Mahanadi, here is Chhattisgarh, okay, and Mahanadi originate from Chhattisgarh, and it drain into Bay of Bengal, and here it flow from Odisha, and some tributaries from Jharkhand, and some tributaries enter in Mahanadi from Maharashtra, and the Mahanadi river cover area of Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha. Then Mahanadi drain into Bay of Bengal and formed delta. Okay. And next we will learn about the river of Krishna. Krishna river originates from Mahabaleshwar, and some tributaries enter into Krishna river, and tributaries come from Karnataka, and Krishna river cover area of Karnataka, Maharashtra and Madhya Pradesh. Then it drain into Bay of Bengal. And last we will discuss about Kaveri river. Kaveri river, it originates from Brahmagiri range of Western Ghat, and then it cover area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and it enter to Tamil Nadu the south of Kudalur, and then it drain into Bay of Bengal. And the Krishna river rising from a spring near Mahabaleshwar. Krishna river originates from Mahabaleshwar, from Maharashtra, and its length is about 1400 kilometer and drain into Bay of Bengal. The Krishna river length is 1400 kilometer, and we can also say that it is second largest river of peninsular river and drain into Bay of Bengal, because largest river in peninsular river is Godavari, and Godavari river length is 1500 kilometer, and the Krishna river length is 1400 kilometer, and then it drain into Bay of Bengal. And its tributaries are Koyna, Gatparba, Musi and Bhima.
एंड इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कोयना है, गतपरबा है, मूसी है, भीमा है, जो अलग अलग, जैसे कि कुछ आपके महाराष्ट्र से, कुछ कर्नाटक से, कुछ आंध्र प्रदेश से में क्या है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके साथ मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होने के बाद जो कृष्णा रिवर है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है, जिसकी वजह से कृष्णा रिवर का जो एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और कृष्णा रिवर का जो एरिया है 1400 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया को क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट देखिए ये कृष्णा रिवर एंड सम ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम कर्नाटक and some from Maharashtra and some from Andhra Pradesh, and Krishna river at last drain into Bay of Bengal and forms delta. Okay, and next we will learn about Kaveri river. Kaveri river, it rises in the Brahmagiri range in Western Ghat, Brahmagiri range, and the Kaveri river rises in the Brahmagiri range and it reaches the Bay of Bengal in south, कुडुलुरु इन तमिलनाडु। एक कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और कावेरी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट के साइड मूव करती है। तो ईस्ट के साइड मूव करती है तो साउथ में जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु कुडुलुरु में एंटर करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है। ओके, तो जो कावेरी रिवर जो एरिया कवर करती है वो है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु उसका लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती है। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अमरावती है, भवानी है, हेमावती और काबिनी है। जो इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो केरला से, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसके साथ मर्ज होती हैं, और मर्ज होने के बाद ये सारी जो रिवर एक बड़ी रिवर बन जाती है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है। एंड इट बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। और कावेरी रिवर के द्वारा जो एरिया बनाया जाता है वो एरिया क्या है, कवर करता है कर्नाटक को, केरला और तमिलनाडु को। और बाद में कावेरी रिवर है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी रिवर है, ये फिर सारी जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और ये सारी जो रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती हैं, और ड्रेनेज होने से पहले डेल्टा बनाती हैं। इसलिए जो ये एरिया है फर्टाइल होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। And the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Jog Falls. You know, Kaveri river originates from western come from Brahmagiri range, and it makes waterfall, and it makes the second biggest waterfall in India, known as Jog Falls. इसके द्वारा जो waterfall बनाया जाता है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग फॉल। और जोग फॉल्स जो वाटरफॉल है, यानी कि जो आपका जो माउंटेन एरिया से जो रिवर जब क्या है नीचे की साइड फ्लो करती है तो वहाँ पे क्या होते हैं वो वाटरफॉल बन जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर होता है। वहाँ टूरिस्ट एरिया भी होता है, लोग काफ़ी वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो उसका नाम है जोग फॉल। और जहाँ वाटरफॉल होता है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जाती है वहाँ पे, क्योंकि क्या है जनरेटर लगाने के बाद वहाँ पे जो पानी फ्लो करता है वहाँ पे बिजली को जनरेट किया जाता है, यानी कि लाइट को जनरेट किया जाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज़ बनाने के बाद उसको क्या है अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता है, जैसे कि मैसूर में, बेंगलुरु में एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स में जोग फॉल्स के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी को क्या है सप्लाई किया जाता है। तो कावेरी सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कावेरी रिवर। एंड द स्टूडेंट, कावेरी रिवर टोटल लेंथ इज 760 किलोमीटर। एंड द स्टूडेंट, other rivers such as, and these are east flowing rivers, and some other rivers, small rivers such as Damodar, Brahmi, Betarni and Subarnakha are some other smaller river of east flowing river. Some river are west flowing and some river are east flowing. Narmada and Tapi river are west flowing river, and Penis and Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi rivers are east flowing rivers. So student, these are the features of peninsular river. Student, and lastly we will recall peninsular river and the Godavari river originate from Nasik district of Maharashtra. Okay, and its tributaries
Panganga, Manzira and Vanganga, and the Godavari river length is 1500 kilometer, and Godavari river is also called Dakshin Ganga, and it's cover parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Odisha and drain into Bay of Bengal. And Krishna river originates from Mahabaleshwar, and it cover parts of Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh, and then it drain into Bay of Bengal. And the Kaveri river originates from Western Ghat of Brahmagiri range, and it cover parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and drain into Bay of Bengal. And Mahanadi river originates from Chhattisgarh, and it cover parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh and drain into Bay of Bengal. So students, these are the peninsular rivers. And student, today your homework solution. First, name the major peninsular river, and the answer is the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri are major peninsular river. From where does the Narmada river rise? Near Amarkantak hills in Madhya Pradesh, the Narmada river rises. Question number 3. Name the states through which the Tapi river flow. Answer is Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Question number 4. In which hills does the Tapi river rise? Answer is Satpura ranges. Question 5. How does the Brahmaputra river enter India? Which are its tributaries? And the answer is the Brahmaputra rises in Tibet near the Mansarovar lake. Then it flows eastward parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes U-turn and enter India into Arunachal Pradesh through a deep gorge, and its tributaries are the Dibang, the Lohit and Kanula. And next question is, write the features of Tapi river. Tapi river rises in Satpura ranges in Batul district of Madhya Pradesh. Second, it also flows in a rift valley parallel to the Narmada river. And third, its basin cover parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra, and its length is about 724 kilometers. So students, these are the features of Tapi river. And question number 7. What is the other name of Brahmaputra river in Tibet? Sangpo river is called Brahmaputra in Tibet. Okay, and in Bangladesh, Brahmaputra is called Jamuna. And student, today your homework. Name any 2 peninsular river which flow through the Rift Valley. And question number 2. Which river is known as Dakshin Ganga? And write any 2 characteristics of it. Question number 3. From which place river Kaveri originate and at which place it is merges. Question number 4. And list any 3 features of the Kaveri basin. Question number 5. Write any 3 features of Krishna river. And question number 6. What is the length of Mahanadi? And question number 7. Name the largest river in peninsular India. So student, all question done in your fair notebook, and also done your map work and all river fill in map. Okay, and keep learning, and thank you.